मैं हूँ Lisha and welcome to my channel. So from today onwards I'm starting a series called Happy Home and this will be in 3 episodes. First episode will be clay DIY for home decorations. In second episode I'll be creating a zen corner in my house. And third and the last episode will be my living room makeover. तो आज है पहला एपिसोड और हर एक एपिसोड में मैं कुछ DIY क्रिएट करूँगी to make my home happy and creative. So today I am going to make a DIY face planter and a candle stand. So before we move on to the video, if you're new here and you wanna see more videos from my channel and you are creative like me, then subscribe to my channel and press the bell icon to get the notification whenever I upload the next video. So you won't miss any update from my channel. To make this more interesting, I will ask you a question at the end of the video जिसका आपको आंसर देना है comment box में. Now let's begin to the video. I'll tell you the main items that you'll need. Air dry clay or you can use ceramic clay as well. I'm using both. A plastic planter जो plant के साथ आते हैं and water. Now take the clay and roll it on any surface that you can wash it later. और इस पॉट पे अच्छी तरह से प्लेस कर देना है. You have to press it hard to spread it evenly. मेरे पास दोनों क्ले है तो मैं पहले एयर ड्राई क्ले लगा दूंगी, देन आई विल अप्लाई द सिरामिक क्ले लेटर. और मेरे पास कुछ पहले के भी क्ले बचे हुए थे, मैं उसे भी यूज कर ले रही हूँ. काफ़ी टाइप के एयर ड्राई क्ले आते हैं बट आपको वो बच्चों वाले एयर ड्राई क्ले नहीं लेना है. आपको स्कल्प ड्राई क्ले लेना है जिससे हम स्कल्पचर्स बनाते हैं. Once I covered the pot, I'll give the shape of hairs. Now I'm placing the clay both side where the ears will be, but it will be covered with hairs. You can take the reference from the internet how you want to make, but I haven't took any reference. This is totally my creation and this is the easiest form I found. You don't need to heat the air dry clay as it dries quickly by itself. वैसे तो सिरामिक क्ले को पॉटरी व्हील्स पे बनाते हैं बट मैं बिना पॉटरी व्हील्स के बना रही हूँ. और अगर इसमें आप पानी ना मिक्स करें तो ये बिल्कुल एयर ड्राई क्ले जैसा काम करता है. इफ़ यू वांट टू ट्राई द सिरामिक क्ले फास्ट you can put it in the sunlight or you can heat it, but I don't know the process of heating. Now I'm taking the ceramic clay and creating her cheeks, chin and eyes. Shape देने के बाद now I'm adding water and making it smooth. This will take some time. Use a sharp object to make the details. Add some more water and clay to make it smooth and let it dry for one day. After it gets dry completely, you will see some cracks, which is fine. If it is big, you can refill it. If it is small, don't worry about it. I won't do anything, I will just paint it and I will apply the first coat with gesso. So the second coat will look more bright and fine. I have applied gesso everywhere and it's dried completely. And now I'll start painting with acrylic paint. You can choose the color of your choice. I want the pinkish tone, so I'm mixing red and white and creating a pink tone, some dark and light shade of the same color for the depth. Just apply the dark shade of the same color around the nose, eyes and lips. ये बहुत जल्दी ड्राई हो जा रहा है तो मेरे पास बहुत कम टाइम है इसे ब्लेंड करने का. If you cannot do it fast, just choose an opaque look rather than blending two colors. मुझे बहुत जल्दी करना पड़ रहा है ये क्योंकि ये कलर्स बहुत जल्दी ड्राई हो जा रहे हैं. That's why I am adding more water and making blush on the cheek. Now some red color on the lips. मैं चाहती थी कि इसके आईज क्लोज्ड हो. आप चाहे तो ओपन आईज भी बना सकते हो. So now I'm creating some eyelashes. I'll make her hairs in dark brown and brown color
Instead of using brown, you can go for black color also. And here I am doing the eyebrows, some more detailing on the eyes. Next, take a spoon of water in a bowl and add 1 spoon of Fevicol in it and mix it well. Apply this mixture on the pot, जो कि एक Mod Podge glue की तरह काम करेगा और एक शाइनी लुक देगा. It's done now. मैंने इसमें सॉइल फिल करके मनी प्लांट लगाया है. For this DIY, I am using a ceramic clay. To make it more loose, I am adding it in the water and इसे हाथों से थोड़ा मिक्स कर लूँगी. For the support, I am taking a small piece of wood and उसे clay से अच्छी तरह से कवर कर दूँगी. इसे थोड़ा प्रेस करके शेप देना पड़ेगा. आप चाहे तो वुड की जगह पुराने यूजलेस पेन और स्ट्रॉ ले सकते हो. And now I am adding some clay at the bottom, and the bottom should be heavy so that it can stand. You should not put all the clay in the water. Only very less amount of clay you will put in water and the rest you will use as it is. Where I have to join the edges, there only I am using the wet clay. जितना स्मूथ चाहिए आपको उतना वाटर डाल के इसे स्मूथ करना पड़ेगा. And this is the top part of the candle stand. And you have to be very careful with the top part because it should be labeled well ताकि कैंडल नीचे ना गिरे. Now I am making the second one with the same process. But here I am creating the bottom part first. पहले वाले प्रोसेस से ये सेकंड प्रोसेस ज़्यादा इजी लगा मुझे. First of all, I'll just make the structure. Then I will add the wet clay and water to make it smooth. इसका स्ट्रक्चर आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं. मुझे ऐसे ही रफ लुक में चाहिए था. और इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग. And now I'll let them dry for 1 day. Then I am painting with gesso and I am applying the gesso all over the candle stand. If you want, you can color them in different color. But मैं इसे white ही रखने वाली हूँ और इसमें मैं gesso के अलावा और कोई भी पेंट नहीं करूँगी. Then for the top part, I thought to add a touch of gold. I have gold acrylic paint that I'll use it on the top. Once I thought to color the whole stand in gold color, but it's looking good in white, I think. Then I'm doing the same with the another stand. And it's done. I thought to place them on my dining table, so मैंने पहले ट्रे रखा है और उसके ऊपर ये स्टैंड रख रही हूँ. Next I'll use these candles जिसे मैंने DIY किया है. I'll just place them on the top. Now it's time to light up. I don't know why, but I'm getting the vibe of Harry Potter.
ये था मेरा आज का एपिसोड और नेक्स्ट एपिसोड में मैं क्रिएट करने वाली हूँ एक जन कॉर्नर मेरे घर पर। तो स्टे ट्यून्ड और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। और इफ़ यू हैव एनी सजेशन देन यू आर वेलकम। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।